Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with journal entries. आज अपने सबसे पहले we shall solve a few illustrations from the institute's study material, which are based on classification of accounts and accounting equation. ठीक है? So last class अपने classification of accounts based on the rules of debit and credit सीखा था and अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है वो भी समझा था। तो इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड आप आज अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है, राइट। अ क्विक recap revision according to the golden rules of debit and credit. There are three classification of accounts: personal, real and nominal. The personal account stands for all the persons. Persons are of three types: natural person, human beings, artificial person, any institution or business entity. Representative person, representing any person. Account representing any person, जिसमें basically outstanding salary, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance, ये सब आएंगे. Then real account stands for all the assets. Nominal account stands for all the expenses, losses, income, gains, and revenues. What are the rules? For personal account, the rule is debit the receiver, credit the giver. For real accounts, the rule is debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, the rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And then according to the modern rules, there are five classifications. What are they? Assets, liabilities, capital, expenses, losses, and then incomes, gains, and revenue. What is the rule of debit and credit? Modern rules. For assets, increase debit, decrease credit. The same rule is for all the expenses and losses के account का. Increase debit, decrease credit. Opposite is the rule for liabilities, capital, income, revenue, and gains. The rule is increase credit, decrease debit. The golden rules are also the golden rules of debit and credit is the traditional approach, and modern rules is the accounting equation approach. Golden rules is the traditional approach, old is gold, modern rules, accounting equation approach. Now, what is accounting equation? Accounting equation क्या है? Assets is equal to liabilities plus capital plus income, revenues minus expenses and losses. Right. So ये सब लास्ट क्लास अपने डिटेल्स में डिस्कस किए थे. आज अपने एक एक करके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑन दीज टॉपिक्स. करेक्ट. चलो क्विकली coming to illustration which is on the classification of accounts. ये पहले करते हैं. Yes, here we go. Illustration
6, page number 2.28. Illustration 6, page number 2.28. So, illustration 6 में the question is show the classification of the following accounts under traditional and accounting equation approach. तो पहले अपने क्या करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को एक एक करके. सारे अकाउंट्स को वी शैल क्लासिफाई अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड देन accounting equation approach. What is traditional approach? The golden rules. Classification is personal, real and nominal. So सबसे पहले एक एक करके सारे आइटम्स का क्लासिफिकेशन अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच. बिल्डिंग, रियल अकाउंट. परचेजेस, नॉमिनल अकाउंट. सेल्स, nominal account. Bank, fixed deposit. Yes, you can classify as a personal because it is a bank fixed deposit. Bank is artificial person, or you can classify it as a real account because bank fixed deposit is an asset. So whichever way you want, you can classify. Accounting effect will be the same. Okay. Rent expense nominal. Outstanding rent personal representative person. Cash asset. Adjusted purchases. Purchases is an expense nominal. Cash asset real. Okay. Closing inventory asset real. Investments asset real. Trade receivables debtors personal. Sales tax payable. Sales tax payable. Payable outstanding liability personal account. Okay. So sales tax payable is representing the sales tax department to whom the amount of sales tax is payable. Sales tax department is a government department, artificial person, representative personal account. Clear? And सबसे important liability, all the liabilities are by default classified in personal account. Discount allowed. Expense nominal, bad debt, loss nominal, capital personal, drawings personal, proprietor का है ये दोनों. Interest receivable account. Why? Representative person representing the entity from whom the interest is to be received. So representative personal account. Interest received अगर होता तो income nominal. Rent received in advance. Representative person personal account. Representing the tenant from whom the rent has been received in advance. Prepaid salary, representative person personal. Bad debts recovered, income nominal. Depreciation expense nominal. Personal income tax. Personal income taxes drawings. Personal income taxes drawings. Drawings proprietor personal account. Okay, clear है? चलो. Now after we have done the classification under traditional approach, that is according to the golden rules, we now do the classification of these accounts under the accounting equation approach following the modern rules. So under the modern rules, accounts are classified as assets, liabilities, capital, income and expense. Income में revenue gains, expense में losses भी. So building asset, purchases, expense, sales, income.
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट असेट, रेंट एक्सपेंस, रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, कैश असेट, adjusted purchases expense, closing inventory asset, investments asset, trade receivables asset, sales tax payable liability, discount allowed expense, bad debt loss तो expense में, capital is capital, drawings भी capital में क्लासिफाई हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी, प्रीपेड सैलरी असेट, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पर्सनल इनकम टैक्स, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल में क्लासिफाई होगा। ओके, क्लियर, राइट। देखो, अपने अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स को फॉलो करके करे या मॉडर्न रूल्स को फॉलो करके करे, द इफेक्ट विल बी द सेम। इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी द सेम whether golden rules of debit and credit is followed during the entire accounting process or the modern rules are followed. Okay, now, so illustration 6 done. Next, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पर illustrations को सॉल्व करेंगे। So coming to illustration 2, let's see. Hmm. Illustration 2 में क्या है, develop the accounting equation from the following information available at the beginning of the accounting period. Beginning means opening date. So opening date में ये सारे आइटम्स का बैलेंसेस दिया हुआ है, अपने को इनसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें जो आइटम्स दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंसेस नहीं है इसमें, सो अपने को क्या इक्वेशन यूज करना है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को इनकम एक्सपेंसेस और इनकम माइनस एक्सपेंसेस का नेट इफेक्ट इज नेट प्रॉफिट। व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। व्हेन एक्सपेंस इज मोर, इट इज नेट लॉस। तो नेट लॉस अपने कैपिटल से लेस करते हैं, राइट। ओके, ठीक है। तो कैपिटल 51,000, ओके, सो कैपिटल 51,000। देन लोन्स एंड ट्रेड पेबल्स, लोन्स एंड ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज कितना हो गया, 11,500 प्लस 5,700। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करके बताओ, हाउ मच इज इट कमिंग टू, 17,200। क्लियर, 11,500 प्लस 5,700, टोटल लाइबिलिटीज इज 17,200। देन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, ये सारे मेरे एसेट्स हैं। तो इन सारे एसेट्स का टोटल करके बताओ, 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300, इट इज कमिंग टू 68,200। क्लियर। सो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन सेट करो, कैपिटल इज 51,000, liabilities is 17,200, 51,000 plus 17,200 is coming to 68,200, yes or no, it is coming to 68,200, liabilities plus capital is coming to 68,200, which is the amount of the assets. So equation set हो गया है, equation set हो गया है, assets is equal to liabilities plus capital। अच्छा, लिखने के लिए I'll tell you when to write।
राइट, अदरवाइज अपने को क्लास में जैसा मैं करने बोल रहा हूँ वैसा करना है, राइट। कैलकुलेटर करने बोल कैलकुलेशन यूज करने बोला तो कैलकुलेशन करना है, एंड देन व्हेन आई टेल यू टू राइट यू विल राइट। क्लियर है? सो इक्वेशन सेट हो गया, फर्स्ट पार्ट अपना डन, एंड देन द सेकेंड पार्ट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, डन, at the end of the accounting period the balances appear as follows. End of the accounting period, end of the accounting period, यानी year end में the balances appear as follows. Capital question mark, यानी अपने को क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। लोन दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स, लोन प्लस ट्रेड पेबल्स, loan plus trade payables 11,500 plus 5,800 is coming to 17,300. So total liabilities is coming to 17,300. Then assets में fixed assets, inventories, trade receivables, cash at bank. Add करो चारों को। Fixed assets 12,720 plus सारे assets को add कर रहे हैं। Inventory 29,000, 22,900, 22,900. Add trade receivables is 17,500. Add cash at bank 15,600. How much is it coming to? Total assets is coming to how much? 68,720. तो आप मेरे साथ नहीं कर रहे फिर, you have to do with me, ठीक है। Total assets is coming to how much? 68,720. Clear? So अपने को end of the accounting period में total assets 6872 720 मिल गया। Liabilities, total liabilities is 17,300. Now we can use accounting equation to calculate the amount of capital at the end of the accounting period. So we know that assets is equal to liabilities plus capital. Assets 68,720, liabilities 17,300. So plus capital, what is the amount of capital? 68,720 minus 17,300. It is coming to how much? Very nice. So you have to do like this only. 51,420. So this is the amount of closing capital. Now tell me one simple question. ठीक है? Understand and try to answer. Closing date का capital कितना निकाला? 51,420 rupees. Accounting equation use करके closing date, end of the accounting period, end of the accounting period, closing capital कितना निकाला? 51,420, 420, and opening date at the beginning of the accounting period, capital was 51,000. Correct. So what is the reason for difference in capital? It is the amount of net profit. So opening date का capital 51,000, closing date का capital 51,420. So 420 से capital increase हुआ है। क्या reason हो सकता है? It is the amount of net profit which has been added to the capital. So what is the net profit during the year? Net profit during the year is closing capital minus opening capital. करेक्ट है? सो क्या लिखा हुआ है? रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। तो हमने किया ना, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन को रीसेट करके क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट निकाला, देन क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट को ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर करके नेट प्रॉफिट निकाला। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। Then prepare balance sheet at the end of the accounting period, which we can do, right?
बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड में सारे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, एंड राइट हैंड साइड में सारे एसेट्स। पार्टिसिपेट क्विकली। हाँ, तो इस तरीके से अपने बैलेंस शीट रेडी कर लेंगे। डन विद दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है। यस, इलस्ट्रेशन 2 जो अपने पहले डिस्कस किए, सॉल्व भी किया है, तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मटेरियल में बेस्ट वे में प्रेजेंट किया हुआ है। सो वी आर नॉट डूइंग बाय राइटिंग, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड एंड सॉल्व्ड। सो आप लोग खुद से सॉल्यूशन को लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ, कॉन्सेंट्रेट। हाँ, एंड वेरी बी वेरी पार्टिसिपेट करना, बी वेरी क्विक टू पार्टिसिपेट। So Mr. David has provided following details relating to his financials. Find out the missing figures. Profits earned during the year 5000, यानी net profit for the year 5000 दिया हुआ है. Assets at the beginning of the year A. So this we need to find out. Liabilities at the beginning of the year 12,000 दिया हुआ है. Assets at the end of the year question mark. B. Liabilities at the end of the year C. We need to find out. Closing capital 35,000. Total liabilities including capital at the end of the year 50,000. From where to start? So that I know accounting equation का समय, तो accounting equation को use करेंगे. My question to you is from where to start? Read करो. देखो, एक चीज समझने का कोशिश करना, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन काम का होता है वो एंड में मिलता है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, बट थोड़ा दिमाग में रखना है क्या, कि हो सकता है जो इंफॉर्मेशन काम का है, जो मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे बढ़ाएगा, तो वो एंड में होता है। बिकॉज सोचो, स्ट्रैटेजी क्या लगा रहा है इंस्टीट्यूट इसके पीछे, उसको पता है स्टूडेंट का साइकोलॉजी क्या है। वो स्टार्टिंग के इंफॉर्मेशन में पहले ही डूब जाएगा, वो लास्ट का इंफॉर्मेशन में कम ध्यान देगा, जबकि लास्ट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है उसी से सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ाया जा सकता है। राइट, तो इस जाल में मत फंसना। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मिल गया होगा आपको हिंट। अपने को क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 35,000 दिया हुआ है, एंड टोटल लाइबिलिटीज including capital at the end of the year. So what is capital at the end of the year? It is closing capital. What is capital at the end of the year? Closing capital. So this 15,000 includes 35,000. Total liabilities including capital at the end of the year. What is capital at the end of the year? Closing capital. Closing capital is given 35,000. So this 50,000 includes 35,000. So difference 15,000 is for liabilities at the end of the year. Balance sheet, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में सबसे पहले कैपिटल, देन बाकी लाइबिलिटीज करके लाइबिलिटीज का टोटल। सो वो टोटल लाइबिलिटीज 50,000 है, जिसमें से कैपिटल 35,000, तो लाइबिलिटीज, बाकी लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर इज 15,000। गॉट माय पॉइंट?
Clear. Now assets at the end of the year, 50, 55,000. How? Why 50,000? Correct. What is accounting equation? Assets is equal to liabilities plus capital. So we say that assets at the end of the year is equal to liabilities at the end of the year 15,000 and 15,000 plus capital at the end of the year. Capital at the end of the year is closing capital, which is 35,000. So 15,000 plus 35,000 is equal to 50,000. एंड सबसे स्मार्ट वर्क क्या होगा? टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट भी इज फॉलोइंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ऑपोजिट साइड राइट हैंड साइड में असेट्स, एंड बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल शुड बी इक्वल, यानी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, यानी बैलेंस शीट भी अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है, राइट? ये चीज ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए ना कि बैलेंस शीट इज आल्सो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर? सो बैलेंस शीट को इमेजिन करो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 35,000, liabilities at the end of the year 15,000. So total liabilities including capital 50,000. Total liabilities including capital is equal to total assets at the end of the year 50,000. Clear hai? So assets at the end of the year is 50,000. Next, tell me how. Okay. अभी 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 कैसे करें आगे इस क्वेश्चन को बताओ? और क्या फाइंड आउट करना बच गया? एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एसेट्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर कैसे फाइंड आउट करें? टेल मी। You have to tell step by step. So assets at the beginning of the year, if we use the accounting equation, assets at the beginning of the year is equal to liabilities at the beginning of the year plus capital at the beginning of the year. Liabilities at the beginning of the year 12,000 दिया हुआ है, तो काश मेरे को कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। वी शैल गेट assets at the beginning of the year. So our task is to first calculate capital at the beginning of the year. Capital at the beginning of the year is opening capital. Opening capital. और अभी जस्ट अपने क्वेश्चन 2 में, इलस्ट्रेशन 2 में एक चीज सीखा था। क्या सीखा था? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 35,000। यस और नो? नेट प्रॉफिट कितना है? 5,000। सो वी नो दैट प्रॉफिट is equal to closing capital minus opening capital. Profit is 5,000. Closing capital is 35,000. And so tell me the amount of opening capital it is coming to. Opening capital is coming to 35,000 minus 5,000, 30,000. So opening capital is 30,000. Capital at the beginning of the year 30,000. Liabilities at the beginning of the year 12,000.
Liabilities plus capital is equal to assets at the beginning of the year. 30,000 plus 12,000 is equal to rupees 42,000. डन. इसको आपने लिखकर सॉल्व करेंगे. ठीक है. राइट. डिस्कस हो गया ये. तो इसको लिखकर सॉल्व करें या होम टास्क. होम टास्क. वेरी नाइस. दिस इज अ स्पिरिट. सो ये दो इलस्ट्रेशंस अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड. एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 4. इलस्ट्रेशन 4 अपना होमवर्क है. इलस्ट्रेशन 4 इज आवर होमवर्क, जहां पर अपने को ये चेक करना है कि ट्रांजैक्शन एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी डिसेक्टेड इनटू इट्स अकाउंटिंग इक्वेशन. सिंपल लैंग्वेज में, हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन काम करता है. ठीक है. तो ये अपने एक बार घर में बिल्कुल से बिल्कुल देखेंगे, क्वेश्चन विद द सॉल्यूशन एंड अंडरस्टैंड. जहां पर दिक्कत होगा वो अपने नेक्स्ट क्लास उसको क्लियर करेंगे. हो जाएगा. बेसिकली इसमें क्या करना है अपने को, हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे बैकग्राउंड में जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन बताना है. हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन देना है. हर एक ट्रांजैक्शन में जो अकाउंटिंग इक्वेशन बन रहा है वो देना है. क्लियर. ठीक है. तो इलस्ट्रेशन 4 होम टास्क. इलस्ट्रेशन 2 बहुत ही इजी था, क्लास में अपने डिस्कस एंड सॉल्व कर लिए. उसको घर में लिखकर सॉल्व करने का देयर इज नो रिक्वायरमेंट. इलस्ट्रेशन 3 अपने घर में लिखकर सॉल्व करके आंसर को मटेरियल से चेक करेंगे. डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास पूछेंगे. सेम इलस्ट्रेशन 4 ऑल्सो. इलस्ट्रेशन 4 को भी घर में लिखकर सॉल्व करना है. पहले देख लेना है इलस्ट्रेशन 4 में, पहले देख लेना है, सोल्यूशन के साथ समझ लेना एंड देन लिखकर सॉल्व करना है. जहां डाउट होगा नेक्स्ट क्लास पूछेंगे. राइट. यस नो. ठीक है. तो अभी अपना इलस्ट्रेशन 2 3 4 एंड इलस्ट्रेशन 6 डन. ओके. नाउ the next the next discussion in this chapter is to understand how transactions, how business transactions are recorded in the books of accounts. How business transactions are recorded in the books of accounts. The business transactions are recorded on a day-to-day basis in the books of accounts. On a day-to-day basis means हर दिन का transactions उस दिन रिकॉर्ड हो जाता है. जैसे टुडे इज 17th, सो 17th में 17th नवंबर में जो ट्रांजैक्शंस हुआ वो 17th नवंबर में उसी डेट में बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड डे टू डे बेसिस में. राइट. एंड रिकॉर्डिंग मींस व्हाट, द ट्रांजैक्शंस आर entered in the books of accounts. You know, day to day, the word day, what is the French word for day? The French word for day is, I'm not here teaching French and Latin. ठीक है. The French word for day is jour. The French word for day is jour. Means daily. Clear? So the French word for day is jour. So in French, bolo, the French word jour means day. So all the transactions are recorded on a daily basis, day to day basis. And recorded means what? Entered. Entered. So process is called entry.
Hence, the process of recording the business transactions in the books of accounts on a day-to-day basis is by passing journal entries. Entries means entered in the books of accounts. Journal coming from the French word jour, which means day, that is daily. सो डेली बेसिस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है ये डिस्कस करने जा रहे हैं. आई नो ये अपने क्लास 11 एंड 12 में 11 में सीखे हैं डेफिनेटली, एंड 11 एंड 12 में काफी सारा प्रैक्टिस किया है. हर एक चैप्टर में जर्नल एंट्रीज ही तो पास करते हैं अपने, राइट? बट स्टिल फ्रॉम द वेरी बेसिक, बिकॉज सीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, तो हर एक चीज का डेप्थ में ज्ञान होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसिटी है ये. So journal recording, journal entry is based on the thumb rule. Thumb rule. So what is a thumb rule? For every debit, there is a equal and corresponding credit. Equal and corresponding credit means what? ध्यान से सुनो. कैसे? कैसे? देखो, ध्यान से सुनना, भी समझा रहा हूं कि जर्नल एंट्रीज पास कैसे होता है. बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है. आई विल एक्सप्लेन. यू ईट झालमुड़ी. सो आप झालमुड़ी खरीदे, झालमुड़ी खरीदे, तो जो झालमुड़ी खरीद रहे इसका दो, ये ट्रांजैक्शन में भी दो एस्पेक्ट है. कैसे? यू आर गेटिंग झालमुड़ी एंड पेइंग कैश, है ना? सिंपल सा, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है आपका, कस्टमर का, मूड़ी वाला का बिजनेस ट्रांजैक्शन है. बट एकदम सिंपल सा लाइव एग्जांपल. सो आप झालमुड़ी खरीदे, व्हाट इज द टू एस्पेक्ट? झालमुड़ी मिला एंड आपने पैसा पेमेंट किया, रुपया दिया. मेट्रो का टिकट खरीदा तो मेट्रो का टिकट मिला एंड यू मेड द पेमेंट. सो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीन. सो इसका दो एस्पेक्ट क्या है? मशीन परचेज हुआ एंड पेमेंट इज मेड. परचेज ऑफ मशीन and making the payment. These are the two aspects. Then next, अपना step क्या है? To identify the accounts affected in these two aspects. दो एस्पेक्ट क्या है? मशीन परचेज हुआ, दूसरा एस्पेक्ट पेमेंट मेड इन कैश. So what are the accounts involved in these two aspects? Purchase of machine, so machinery account is affected. Payment made, so cash account is affected. So what are the accounts involved? Machinery account and cash account. तो अपने अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड को निकाल लिया, आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा अकाउंट्स इफेक्ट हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन. देन अपने को देखना है इन अकाउंट्स में, इन अकाउंट्स, हाउ दीज अकाउंट्स आर अफेक्टेड. हाउ दीज अकाउंट्स आर अफेक्टेड. How these accounts are affected in what sense? Increase, decrease. But how these accounts are affected in terms of increase or decrease.
सो मशीनरी अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ एकदम बेस बन रहा है फाउंडेशन। फिर ये गया तो फिर सो मशीनरी अकाउंट, हाउ इज मशीनरी अकाउंट गेटिंग अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज? मशीन परचेज हुआ तो मशीनरी अकाउंट इंक्रीज, सो मशीनरी अकाउंट इंक्रीज एंड कैश अकाउंट डिक्रीज बिकॉज पेमेंट मेड इन कैश तो कैश अकाउंट। देन क्लासिफाई करना है अपने को। इनफैक्ट इंक्रीज डिक्रीज से पहले सजेस्ट यही करूंगा कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है उनको क्लासिफाई करो। तो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट इज क्लासिफाइड मॉडर्न रूल्स को, यस मॉडर्न रूल्स को यूज करना है अपने को जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए। सो मशीनरी अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एन असेट, कैश अकाउंट एसेट। Increase decrease, machinery account increase, cash account decrease. Now apply the rules. So machinery asset increase debit, cash asset decrease credit. तो देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, दोनों इक्वल अमाउंट से हुआ। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यानी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के प्रोसेस में जब कोई अकाउंट को डेबिट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेम टाइम में कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा विथ एन इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट। यानी ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इन द होल अकाउंटिंग प्रोसेस। क्लियर? समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो जर्नल एंट्री अपने पास करते हैं, दैट जर्नल एंट्री इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? सो क्या प्रोसेस यू कैन टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ जर्नल एंट्री। सबसे पहला काम क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये थंब रूल मेंटेन करके चलना है। थंब रूल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि पूरे अकाउंटिंग में अपने को एक ही थंब रूल लगाना है। थंब रूल क्या है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ओके, सो अब नाउ टेल मी द प्रोसेस। जैसे बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ, पहला काम क्या है? बिजनेस के हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। तो सबसे पहला काम है वो दो एस्पेक्ट को समझना कि व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स of this business transaction. Say for example, payment of salary. This is a business transaction. Payment of salary rupees 10,000. So what are the two aspects of this transaction? Salary expenses incurred. Number one, salary expenses incurred. Number two, payment made in cash. So these are the two aspects of this transaction. Now we need to identify the accounts involved. So what are the accounts involved? Salary expense incurred, so salary account involved. Payment made in cash, so cash account involved. So salary account, cash account. Then आप classification करो, salary account is expense, cash account is asset. Modern rules को use करें, so we are classifying according to the modern rules of debit and credit. So salary expense, cash asset. Then increase decrease.
सैलरी एक्सपेंस इज इनकर्ड, एक्सपेंस इनकर्ड यानी एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज तो व्हाट डू वी डू, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश एसेट, इधर में कैश का पेमेंट हो रहा है, कैश से पेमेंट हो रहा है, तो एसेट कैश डिक्रीज, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सो ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सैलरी अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट। 10,000 10,000 से फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एंड जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का सिस्टम क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट को लिखेंगे कैसे, ऐसे, अंडरस्टैंड द प्रोफॉर्मा। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, अपने बुक्स ऑफ एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो ऊपर में जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, वो बिजनेस एंटिटी का नाम इन द बुक्स ऑफ मधुसूदन एंड कंपनी से बिजनेस एंटिटी, नेम ऑफ बिजनेस एंटिटी, जर्नल एंट्रीज, डेट, फॉर्मेट क्या है, सबसे पहला कॉलम डेट का, डेट वाइज अपने एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, which we also call as maintaining a chronological order. Chronological order means date wise all the transactions are recorded. So date mention, then journal entry, salary account debit to cash account, इस तरीके से लिखना है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। Then every entry is followed by a small description of the transaction, जिससे जो भी जर्नल एंट्री को पढ़ रहे हैं वो नरेशन रीड करके ट्रांजैक्शन को समझ जाए। नरेशन बेसिकली ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी नीड टू गिव नरेशन, एंड नरेशन फॉर्मेलिटी के लिए देना। नरेशन दिया हुआ बस दिस मच शुड बी विजिबल टू द एग्जामिनर, he will not go and check whether narration language is correct or wrong. Extra marks are not given for that. But if the narration is absent, he might deduct little marks. ठीक है, but if the question specifies narration not required, then do not give narration. Then ledger folio का कॉलम होगा, ledger folio because journal entries रिकॉर्ड करने के बाद the next step is to maintain ledger accounts. तो हर एक ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग उसके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में होता है। तो कौन से लेजर अकाउंट में हुआ है उसका नंबर इज नोटेड इन लेजर फोलियो का कॉलम। जैसे सैलरी अकाउंट में ये जाएगा तो सैलरी का लेजर अकाउंट ओपन करेंगे, तो सैलरी का लेजर अकाउंट का नंबर इज नोटेड इन लेजर फोलियो का कॉलम। देन वी हैव टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। So whatever amount is debited is written in the amount column for debit, and then whatever amount is credited, it is written in the amount column of credit. And for every debit there is a equal and corresponding credit. So debit credit हर जर्नल के केस में मैच करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? So this is the format pro forma
of journal entries in the books of name of the business entity, journal entries करके date, particulars, ledger folio, debit amount rupees, credit amount rupees, entry pass करके नीचे में नरेशन लिख के we shall draw a line. क्वेश्चन बोलता है नरेशन मत दो तो मत देना, कुछ नहीं बोलता है तो नरेशन देना है, फॉर्मेलिटी के लिए देना है, दो तीन वर्ड्स में नरेशन को, यस एक इंपॉर्टेंट चीज नरेशन, तीन चार वर्ड्स में नरेशन लिख देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज नरेशन बीइंग से स्टार्ट करेंगे, बीइंग का मतलब क्या होता है, ये हुआ है, बट आजकल तो बीइंग भी नहीं लगाते लोग, सिंपली ब्रैकेट्स में नरेशन को लिखकर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो बीइंग लगाना इज नॉट मैंडेटरी एज सच, बट लगाते हैं काफी टाइम से तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो अभी ये जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वन, इलस्ट्रेशन वन। ठीक है, चलो। Following are the transactions entered into by R after he started his business. So R is the name of the proprietor. Show how various accounts will be affected by these transactions. So basically we need to pass journal entries, dates, साथ में transactions and उनका amount दिया हुआ है। R is proprietor. Started business with 5,000. So what are the two aspects? What are the two aspects? Capital is introduced and 5,000 is received by the business. Capital is introduced. What are the two aspects? Capital is introduced because whenever a proprietor starts a business with some assets, say for example, here it is cash. So it is called capital. So whatever amount of money a proprietor starts a business with is called as capital. So here R started business with rupees 5,000. So what are the two aspects? Capital is introduced and business has received rupees 5,000. How is capital introduced? By receiving 5,000. Business has received 5,000. Yes, no. So the two aspects is capital introduced, 5,000 received by the business. Accounts involved, capital introduced, so capital account, 5,000 received, so cash account. So capital account, cash account. Capital account, cash account. Now classify. Capital account is classified as capital itself. It is falling in its own classification, capital account, and cash is an asset. Ab increase, decrease, capital increase, credit, cash, asset, business को cash receive हो रहा है, तो asset, cash, asset, increase, debit. So the journal is cash account debit to capital account. Yes, no? Cash account debit to capital account. Correct. Then he purchased furniture for rupees 1,200. What are the two aspects in this transaction? Purchase of furniture and payment made in cash. So what are the accounts involved? Furniture is purchased, so furniture account. Payment is made, so cash account. So furniture account and cash account. Now classify. Furniture account, asset, furniture purchase कर रहे हैं तो asset increase debit, furniture account debit. Cash का classification is also asset. अब क्योंकि कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? सो द जर्नल इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,200। ये तो रहा।
क्लियर है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 1200. Hmm. Paid his salary to his clerk. What are the two aspects? Salary expense incurred and payment in cash. Salary expense incurred, so salary account is affected. Payment made, so cash account. Salary account, cash account, these are the accounts involved. Then classify salary account, expense, increase, debit, expense incur हुआ है यानी expense increase debit, payment in cash, cash account, asset, payment हुआ है तो cash account, decrease, asset, decrease, credit. So the entry is salary account debit to cash account. Paid rent. What are the two aspects? Rent expense incurred. Second, payment in cash. So what are the accounts involved? Rent account, cash account. Rent expense increase debit, cash asset decrease credit. So rent account debit to cash account. Received interest. What are the two aspects? Interest income earned plus amount received in cash. So two aspects, interest income earned and amount received in cash. What are the accounts involved? Interest income and cash account. Interest income is income, income हो रहा है तो income increase credit, and cash asset, cash receive कर रहे हैं तो asset increase debit. So entry is cash account debit to interest income. Clear है? So illustration 1, 2, 3, 4 आपका होमवर्क है. Wait. Cash account debit to interest income 2000. ठीक है? हो गया? हम्म. Now we come to illustration 5. So illustration 5 करेंगे अपने. Ready? Journalize the following transactions. Also state the nature of each account involved in the journal entry. So following figures are given in rupees 100. Okay. Chalo. December 1, 2022, Ajit started business with capital. So Ajit is the proprietor. He started business with capital rupees 4 lakh, rupees 4 lakh. So what are the two aspects? Capital introduced, business receives cash 4 lakh. What are the accounts involved? Capital account and cash account. Capital increase credit, cash asset increase debit. So the journal is cash account debit to capital account rupees 4 lakh. बोलो. December 1.
एक्चुअली एक चीज इधर में अगर अपने देखे, सो December 3 को एक ट्रांजैक्शन हुए वेयर he withdrew cash from for business from the bank, where he withdrew cash for business from the bank, एंड 1 दिसंबर को तो उसने बिजनेस स्टार्ट ही किया था, और 3 दिसंबर को वो बैंक में से 2,000 निकाल रहे हैं। तो बैंक में से 2,000 निकालने के लिए बैंक में रुपया भी तो होना चाहिए। तो इससे अपने क्या समझे कि ये जो 4 लाख रुपया है, ये सीधा बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट, असेट इंक्रीज डेबिट, so the entry will be bank account debit to capital account, not cash account debit. It will be bank account debit to capital account, क्योंकि December 3 को वो बिजनेस बैंक में से 2,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है फॉर बिजनेस पर्पस। तो उसके लिए तो बैंक में बैलेंस होना चाहिए ना, एंड अभी तो वो December 1 को बिजनेस स्टार्ट ही किया है। तो इससे क्या समझ में आया कि 4 लाख रुपया बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया। So the entry is bank account debit to capital account rupees 4 lakh. Okay, done. Mhm. Being capital introduced, मतलब नरेशन को अगर क्वेश्चन बोल रहा है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तब तो लिखना ही नहीं, इट इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन इज साइलेंट, वी नीड टू गिव नरेशन एंड वी नीड टू बी स्मार्ट एनफ to give the narration in 3-4 words. Narration should be for the visibility of the examiner. He will not check, correct the narration and give or deduct marks for that. But narration should be visible if being capital introduced. Okay. December 3, he withdrew cash for business from the bank. Cash for business from the bank rupees 2,000. What are the two aspects? What are the two aspects? बैंक में से 2,000 निकाला एंड कैश बॉक्स में 2,000 आया। टू एस्पेक्ट्स क्या है? बैंक में से 2,000 निकाला और बिजनेस के कैश बॉक्स में 2,000 डाला। सो कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट इज एन असेट, बैंक में से 2,000 निकाल रहे हैं तो एसेट डिक्रीज, क्रेडिट, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश, कैश असेट, कैश अपने कैश बॉक्स में डाल रहे, बैंक में से निकाल कर कैश अपने बिजनेस के कैश बॉक्स में डाल रहे। तो कैश बॉक्स में कैश असेट इंक्रीज हो रहे, असेट इंक्रीज तो डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 2,000। एक डाउट है, डाउट क्या है कि इसमें ड्राइंग्स नहीं आएगा, क्यों? ड्राइंग्स कब आता है? ड्राइंग्स के लिए द कीवर्ड इन द क्वेश्चन इज पर्सनल। ड्राइंग्स आइडेंटिफाई करने के लिए देर इज अ कीवर्ड, सर्च वर्ड इज पर्सनल। सो इधर में जो कैश विड्रॉ हो रहा है दैट इज फॉर बिजनेस नॉट फॉर पर्सनल, सो ड्राइंग्स अकाउंट विल नॉट बी affected, इट इज नॉट अ ड्राइंग्स। सो द एंट्री इज December 3 को, बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट क्यों नहीं आया? तो क्या था ये? वेरी नाइस, वेरी नाइस। नरेशन, being cash withdrawn for business purpose.
नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दो ना, ट्रांजैक्शन को थोड़ा शॉर्ट में लिख दो, वही तो है नरेशन। नरेशन का कंसेप्ट कैसे, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट। December 5 ही परचेज्ड गुड्स। जब भी गुड्स परचेज होता है, वी use purchases account. Purchases account is used whenever goods are purchased. By making payment through bank. So what are the two aspects? Purchase of goods and payment through bank. Purchase of goods के कारण purchases account involved. Purchases account is used for purchase of goods. So purchases account and payment made through bank. So bank account. So purchases account, bank account. Purchases expense, परचेज कर रहे हैं यानी एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। पेमेंट थ्रू बैंक, बैंक से पैसा निकल रहा है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सो एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 December 5। Narration is very simple, being purchase of goods. December 8, he sold goods for rupees 16,000 and received payment through bank. So, what are the two aspects? Sale of goods and payment received in bank. So, what are the accounts involved? Sales account and bank account. Sales income increase credit, bank asset increase debit. So, entry is bank account debit to sales account. जब भी गुड्स का सेल होता है, सेल्स अकाउंट इज affected. तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000। Then December 10, he purchased furniture and paid by check 2,500. So what are the two aspects? Purchase of furniture and payment by check. Accounts involved, furniture account, check से payment हो रहा है तो बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। फर्नीचर एसेट परचेज कर रहे, इंक्रीज डेबिट, देन बैंक चेक से पेमेंट कर रहे, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सो द जर्नल इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो जब भी गुड्स परचेज होता है, सो वी यूज परचेजेस अकाउंट। गुड्स को छोड़कर बाकी कोई भी चीज परचेज हो रहा है, तो जो चीज परचेज हो रहा है उसके नाम से वो अकाउंट होगा। जैसे फर्नीचर परचेज हो रहा है, फर्नीचर इज नॉट गुड्स। गुड्स का मतलब क्या? गुड्स का मतलब क्या? आइटम्स फॉर रीसेल, आइटम्स फॉर सेल गुड्स, यानी जिस चीज का बिजनेस है, बेसिकली जिसको बेचने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो इधर में फर्नीचर मेरा एसेट एज यू सेड, सो फर्नीचर परचेज हो रहा है, फर्नीचर इज नॉट गुड्स, इसलिए फर्नीचर अकाउंट। सो द जर्नल इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,500। क्लियर है? December 10, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,500।
Okay. Next. December 12, he sold goods to Arvind 2400। इसका दो एस्पेक्ट क्या है? व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? सेल ऑफ गुड्स एंड दूसरा एस्पेक्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 2400 टू बी रिसीव्ड, receivable from Arvind. Arvind is who over here? A debtor. So what are the two aspects of this transaction? There is a sale of goods and then amount to be received from Arvind. So what are the accounts involved? Sale of goods to sales account, amount to be received from Arvind, so Arvind account. Now sales account income, sale कर रहे हैं, increase credit. Arvind कस्टमर जिसको क्रेडिट में सेल किया, डेटर एसेट इंक्रीज हो रही है, अरविंद को सेल कर रहे हैं, हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है, सेल कर रहे हैं अरविंद को तो डेटर इंक्रीज, डेबिट, सो अरविंद अकाउंट डेबिट, अरविंद डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2400। क्लियर? सो अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2400। क्लियर है? December 12। कैश या पेमेंट रिसीव्ड ये सब नहीं बोला है तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी उधार में सेल हुई। सो December 12, जर्नल इज अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट इज 2000, being sales made on credit to Arvind. Okay, December 14, he purchased goods from Amrit rupees 10,000. So what are the two aspects? Purchase of goods and amount to be paid to Amrit. So there is a liability of rupees 10,000 towards Amrit. Amrit is a creditor जिनसे उधार में गुड्स परचेज किए, पेमेंट का बात नहीं हुआ है तो उधार में हुआ है ट्रांजैक्शन, राइट? सो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? परचेज ऑफ गुड्स एंड अमाउंट टू बी पेड टू Amrit, पेएबल, पेएबल टू Amrit, लाइबिलिटी, Amrit क्रेडिटर है, लाइबिलिटी increase credit. So what are the accounts involved? Purchase account and Amrit account. So purchase account is expense, increase debit, purchase कर रहे हैं expense incur, increase debit, and Amrit creditor liability, liability incur हो रहा है, liability बढ़ रहा है, the amount is payable to Amrit, liability increase, credit. So entry is purchases account debit to Amrit account 10,000, 10,000, December 14। बोलो। अमाउंट बोलो। Being goods purchased from Amrit on credit. Then next बताओ। December 15, he returned goods to Amrit rupees 500. So what are the two aspects? There is return of goods. Second aspect, the liability towards Amrit comes down. Less amount is payable to Amrit.
5,000 less is payable to Amrit. Absolutely correct. Very nice. So there is return of goods. There is return of goods. And since goods are returned, less amount is to be paid to the creditor, Mr. Amrit. Very nice. Very nice. What are the accounts involved? Purchases return account. ये परचेज किया हुआ गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं. सो व्हाट इज अकाउंट इन्वॉल्व्ड? परचेजेस रिटर्न अकाउंट. किसको रिटर्न कर रहे हैं? अमृत. सो अमृत अकाउंट. सो व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? परचेजेस रिटर्न अकाउंट एंड अमृत अकाउंट. परचेजेस रिटर्न. परचेजेस रिटर्न. परचेजेस का क्लासिफिकेशन क्या है? एक्सपेंस. सो परचेजेस रिटर्न का क्लासिफिकेशन भी एक्सपेंस है. बट परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट होता है. परचेज करते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट. परचेजेस रिटर्न अगर होता है तो एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट. क्लियर है? तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. अमृत इज अ क्रेडिटर, लाइबिलिटी. अब अमृत को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो अमृत के लिए बिजनेस का लाइबिलिटी कम कम अमाउंट देना पड़ेगा ना, बिकॉज बिजनेस अमृत को गुड्स वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं. सो बिजनेस का लाइबिलिटी अमृत के लिए कम, डिक्रीज डेबिट. सो अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट. ঠিক আছে? सो बोलो December 15. अमृत वेरी नाइस. बीइंग गुड्स रिटर्न टू. अच्छा मेरे को बताओ, ये ट्रांजैक्शन के बाद, परचेज रिटर्न 500 का होने के बाद, व्हाट इज द फाइनल अमाउंट टू बी पेड टू अमृत? 9,500. अमृत से 10,000 का परचेज किए थे, उसमें से 5,000 का गुड्स, सॉरी, 500 का गुड्स रिटर्न कर दिए. 10,000 का गुड्स परचेज किया था December 14. देन December 15 500 का गुड्स रिटर्न कर दिए. सो व्हाट इज द नेट अमाउंट टू बी पेड लाइबिलिटी टू बी पेड टू अमृत इज 9,500. ओके. December 16 he received from अरविंद. अरविंद के साथ पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? अरविंद को बिजनेस ने गुड्स सेल किया था 2,400 का. सो बिजनेस को अरविंद से रिसीव रिसीव करना है 2,400. अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2,400. अभी December 16 को क्या हो रहा है? बिजनेस ने रिसीव किया अरविंद से 2,300 इन फुल सेटलमेंट. अरविंद से कितना रिसीव करने का था? 2,400. बट 2,300 हैज बीन रिसीव्ड. कितना रिसीव किए? Received from Arvind 2,300 in full settlement means what? This is the final amount to be this is the final amount received from Arvind. यानी इसके बाद अरविंद का अकाउंट क्लोज. अरविंद का अकाउंट क्लोज यानी अरविंद से इसके बाद और कुछ नहीं रिसीव होगा. जो है बस इतना ही रिसीव करके अरविंद का अकाउंट को क्लोज करेंगे. इसके बाद अरविंद से कुछ और रिसीव करना बाकी नहीं रहेगा. बट अरविंद से कितना रिसीव करना बाकी था? 2,400. कितना रिसीव किए फुल सेटलमेंट में, जिसके बाद अरविंद का अकाउंट क्लोज हो जाएगा? 2,300. यानी 100 रुपए का बिजनेस ने क्या किया? छूट दिया, डिस्काउंट दिया.
Discount allowed is 100. So. What are the aspects involved? Cash received, cash received 2300. Discount allowed 100. And अरविंद का बैलेंस, अरविंद का लेजर अकाउंट क्लोज्ड. क्लियर? कर रहा हूं. चलो. राइट. अरविंद का अकाउंट क्लोज हो गया. तो अरविंद के अकाउंट में 2400 का बैलेंस था पहले, तो वो अभी क्लोज हो जाएगा. तो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड अरविंद अकाउंट. कैश अकाउंट, कैश कितना रिसीव किया? 2300. कैश अकाउंट असेट इंक्रीज डेबिट 2300. डिस्काउंट अलाउड कितना का? 100. एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100. अरविंद डेटर एसेट, वो अपना पेमेंट क्लियर कर रहा है, फुल सेटलमेंट, जिसके बाद उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यानी डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट. अरविंद का अकाउंट क्लोज हो जाएगा ना, वो डेटर था, तो डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट, सो अरविंद अकाउंट क्रेडिट. कितना से? 2400. बिकॉज उसका अकाउंट कितना का क्लोज हो रहा है? 2400 का. सो to Arvind account 2400. So what is a journal entry? Cash account debit 2300. Discount allowed account debit 100 to Arvind account 2400. Clear है? चलो. Which date? Date December 16. Cash account debit. How much? Very nice. Discount allowed account debit 2. How much? Very nice. Being amount received from Arvind in okays. December 18, he withdrew goods for personal use 1000. Personal use means the first thing that should come to your mind is drawings. Personal use is the keyword for drawings. So what is the two aspect? What are the two aspects? Proprietor ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है एंड दूसरा एस्पेक्ट गुड्स निकला है. करेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट गुड्स निकला है बिजनेस में से. ड्राइंग्स अकाउंट का क्लासिफिकेशन इज कैपिटल. एंड ये जो गुड्स निकला है, ये कौन सा गुड्स है? जो पहले परचेज किया था. तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? परचेजेस अकाउंट. सो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? ड्राइंग्स अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैपिटल. ड्राइंग्स करने से कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज. डिक्रीज डेबिट. राइट. बिकॉज जब प्रोप्राइटर बिजनेस में कुछ लेकर आता है तो उसका कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होता है. जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ भी निकालता है तो उसका बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज हो जाता है. तो ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करता है. कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. सेकेंड, परचेजेस अकाउंट का क्लासिफिकेशन एक्सपेंस. करेक्ट.
इसमें परचेज किया हुआ गुड्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। परचेज किया हुआ गुड्स डिक्रीज हो रहा है, परचेजेस एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। सो द एंट्री इज एक्सेलेंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। डेट बताओ बेटा। दिसंबर। हाउ मच? 100, 1000। नेक्स्ट बेटा। अच्छा, December 20 he withdrew cash from business for personal use. So personal use is the keyword for drawings. So there is a drawings of 2000. And what has been drawn? Cash. So what are the accounts involved? Drawings account and cash account. So drawings capital decrease debit अभी just हमने डिस्कस किया, यानी drawings account हमेशा डेबिट, कैश असेट। अच्छा, कैश निकाल रहा है बिजनेस में तो कैश, बिजनेस में कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। डेट दिसंबर। टेल मी द अमाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट। December 24 he paid telephone charges 110. So what are the two aspect? Expense of telephone charges incurred and payment made in cash. So accounts involved, telephone charges and cash account. Telephone expense increase, cash asset decrease। सुपर, ये आना चाहिए राइट। टेल सीए फाइनल। सीए फाइनल का अकाउंट्स का कोई भी ट्रांजैक्शन का आप मेरे को डेबिट क्रेडिट इस तरीके से पूछेंगे तो मिलेगा। डेट December 24। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन मिसेलेनियस एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। जो चुटपुट खर्चा होता है ना, लिटिल लिटिल पेटी एक्सपेंसेस, दे आर ऑल क्लासिफाइड अंडर वन सिंगल हेड इज miscellaneous expenses. So telephone charges account debit to amount, follow। हम्म, उससे पहले एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। मतलब ट्रांजैक्शन में क्या दो चीज हो रहा है, हर चीज, हर ट्रांजैक्शन में दो चीज होता है, टू एस्पेक्ट्स। ओके। December 26 अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ₹9450। अमृत से पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, लेटेस्ट सर्च। यस, December 14 को अमृत से 10,000 परचेज किए थे, एंड नेक्स्ट डे December 15 को अमृत को 500 का गुड्स रिटर्न किए। सो व्हाट वाज द नेट अमाउंट पेबल टू अमृत? 9,500। अभी क्या हो रहा है, हाउ मच इज पेड टू अमृत? 9450। दिस अमाउंट इज इन फुल सेटलमेंट, यानी इसके बाद अमृत का अकाउंट सेटल्ड यानी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नथिंग मोर
is to be paid to Amrit. So बिजनेस ने 9,500 के अगेंस्ट 9,450 पे करके अमृत के अकाउंट को सेटल यानी क्लोज कर दिया है. तो 50 रुपीज का डिस्काउंट बिजनेस को रिसीव हुआ. सो देर इज अ डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 50. सो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? कैश अकाउंट, बिकॉज पेमेंट हुआ है 9,450. डिस्काउंट रिसीव्ड 50. एंड द लाइबिलिटी इज सेटल्ड. अमृत अकाउंट इज सेटल्ड. लाइबिलिटी कितने का था? 9,500. सो टेल मी, कैश, कैश अकाउंट असेट, पेमेंट कर रहे हैं, डिक्रीज, क्रेडिट. सो कैश अकाउंट क्रेडिट 9,450. डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, इनकम हो रहा है ना, 50 रुपए का इनकम हो रहा है, तो इनकम इंक्रीज, क्रेडिट. सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 50. अमृत क्रेडिटर है, लाइबिलिटी सेटल कर रहे हैं, उसका अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो हमारा लाइबिलिटी कम हो रहा है ना, पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट करने से लाइबिलिटी कम होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, डेबिट. लाइबिलिटी कितना का कम हो रहा है? 9,500. बिकॉज पेमेंट करके अपने अमृत के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं. अमृत के अकाउंट में कितना का बैलेंस था? 9,500. सो अपने 9,500 का लाइबिलिटी को क्लियर, क्लियर कर रहे हैं, फुल्ली सेटल कर रहे हैं. सो लाइबिलिटी 9,500 का कम हो रहा है. सो अमृत क्रेडिटर, लाइबिलिटी, पेमेंट करने से लाइबिलिटी डिक्रीज, डेबिट. सो अमृत अकाउंट डेबिट 9,500. सो द जर्नल इज Amrit account debit 9,500 to cash account 9,450 to discount received 50. Yes, beta. Income. Clear? Quick doubt? Okay. So December 26. बोलो. अमृत ना, अमृत अकाउंट डेबिट 9,500 to cash account 9,450 to 50. Narration correct. Being amount paid, हमने लिखा ही है, लिखा है क्या ये नरेशन? ठीक है. सो बीइंग अमाउंट पेड टू अमृतिन, फुल सेटलमेंट. एक्सीलेंट. टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50. चलो नेक्स्ट. December 31 is very easy. Paid for stationery 200, rent 5,000, salaries 2,000 from bank. So these are all expenses. Expenses incur हो रहा है यानी expenses increase debit. Payment banks हो रहा है, bank asset decrease credit. So entry is respective expenses account debit to bank account. So entry क्या होगा? Stationery account debit 200, rent account debit 5,000, salaries account debit 2,000 to bank. How much? 7,200. Yes, being expenses paid through bank. December 31. एक एक करके बताओ. Wait. Stationery account debit 200, rent account debit 5,000, being expenses paid through bank.
मैं तो सिंपली यही लिखता बीइंग एक्सपेंसिव स्पीड टू सेव टाइम, बिकॉज थ्रू बैंक लिखने में यू वेस्ट 2-3 सेकेंड्स, है ना? Okay, the last entry in this sum, the last transaction, December 31, goods distributed by way of free samples, 2000 free samples की तरह goods को distribute किया, तो इससे क्या हो रहा है? एडवर्टीजमेंट हो रहा है, एडवर्टीजमेंट करने के चक्कर में हमारा परचेज किया हुआ गुड्स का अमाउंट कम हो जा रहा है, राइट? सो टू एस्पेक्ट्स क्या है? टू एस्पेक्ट्स क्या, एडवर्टीजमेंट होना एंड दूसरा इसके चलते गुड्स का निकल जाना एज फ्री सैंपल्स. सो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? एडवर्टीजमेंट अकाउंट. एंड ये कौन से गुड्स निकल रहे हैं जो पहले परचेज हुए थे? सो परचेजेस अकाउंट. गुड्स के लिए हमेशा परचेजेस अकाउंट, गुड्स जो परचेज हुए थे उनके लिए परचेजेस अकाउंट. सो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इज एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट. एंड परचेज किया हुआ गुड्स, परचेज किया हुआ गुड्स कम हो रहा है, purchases expense, परचेज किया हुआ गुड्स कम हो रहा है, expenses decrease to purchases account credit. So the entry is advertisement account debit to purchases account 2000 December 31. Hmm. Being goods distributed as free samples. Being advertisement expense. ठीक है, right? So advertisement account debit to purchases account. Correct. चलो, तो ये इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व. इलस्ट्रेशन 6 भी हो गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का था. इलस्ट्रेशन 7 अभी जस्ट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, एंड देन इसको आप होम टास्क में सॉल्व करोगे. रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट. बोलो. कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, bought goods from Sham, bought from Sham goods on credit, purchases account debit to Sham, received from Krishna, allowed him discount. So tell me, cash account debit 1,45,000, discount allowed 5,000 to Krishna account 1,50,000, paid Sham cash 2,15,000, discount allowed. This is not discount allowed, this is discount allowed to the business from Mr. Sham. इसलिए इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करना इंडिस्पेंसेबल है, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मटेरियल को सॉल्व करके ही हम लोग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझ पाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, क्या बताना चाहता है. क्या बता रहा है इसमें? श्याम से बिजनेस ने परचेज किया था, तभी बिजनेस श्याम को पेमेंट कर रहे हैं. तो इधर में जो डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, ये डिस्काउंट अलाउ बिजनेस को हो रहा है फ्रॉम मिस्टर श्याम. So this is discount received. क्लियर है? सो एंट्री क्या होगा? श्याम अकाउंट डेबिट 2 लाख, कितना? 2,25,000, टू कैश 2,15,000, टू डिस्काउंट रिसीव 10,000. सो डिस्काउंट रिसीव्ड है. कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, पेड रेंट, पेड सैलरी. करेक्ट. रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश. क्लियर, इजी. तो अपने को अपने आज क्लास में इलस्ट्रेशन 1 to 7 को सॉल्व कर लिया पूरा, राइट?
ये 1 to 7 इलस्ट्रेशन 1 to 7 में हमारा होम टास्क नेक्स्ट क्लास के लिए इज टू डू written practice of illustration 3, 4 and 7. Written practice of illustration 3, 4 and 7. Written practice लिख कर करेंगे. इसमें एक टॉपिक खाली बचा हुआ है, दैट इज जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो ये अपने नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे. आज के लिए इतना ही. समझ में आज का क्लास? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? नाइस, वेरी नाइस. चलो देन आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड बाय. टेक केयर. बाय.